Cost accounting is a branch of accounting. It is the younger than financial accounting and has developed because financial accounting alone could not serve all the purpose of modern business. कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच है अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से छोटा है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकेले सभी पर्पस को सभी उद्देश्यों को पूर्ति नहीं कर पा रहा है एक मॉडर्न बिजनेस में। Financial accounting play a very useful role, especially in indicating the rules of operations during a period and also portraying the financial position of a concern. But for carrying on day-to-day work, the management of any undertaking will need much more information than financial accounting, such as given. Question mentioned below will always be affect the management of an industrial concern. कहने का अर्थ ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकेले इतना नहीं संभाल पा रहा था अकाउंटिंग के मेथड्स को, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग को इसके अंडर बनाया गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन में एक पोर्ट्रेइंग का काम करता है जो बिजनेस के फॉर्म को, कंसर्न को, फाइनेंशियल पोजीशन को, कॉस्टिंग के बारे में इन्फॉर्म करवाता है। यह डेली डे टू डे वर्क एंड मैनेजमेंट अंडरटेकिंग को इन्फॉर्म करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लिंक करता है। यहाँ पर हम लोग कुछ आकर देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कंसर्न, ये क्या कर सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इज देयर एनी वेस्टेज ऑफ मटेरियल और टाइम, क्या इसमें मटेरियल का वेस्टेज हो रहा है या टाइम हो रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा हम ये इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। द लेवल ऑफ एफिशिएंसी व्हाट इट शुड बी, कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड से हम ये लेवल ऑफ एफिशिएंसी को ज्ञान कर पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं। नेक्स्ट वुड बी व्हाट शुड बी सेलिंग ऑफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल और व्हाट शुड बी द प्राइस टू बी कोटेड टू ए कस्टमर फॉर होम ए जॉब इज टू बी डन। कहने का अर्थ यह है कि क्या हमारे प्राइस डिटरमाइन करने में कॉस्ट अकाउंटिंग का एक मेजर रोल प्ले करता है। एडिशनल सेल्स कैन बी मेड एट कंसेशनल प्राइस, हाउ मच कंसेशन इन प्राइस शुड बी ऑफर्ड। द फिफ्थ वन इज 5 when times are difficult and sales are not easy prices had to be reduced। कह रहा है कि जब सेल्स टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है और सेल्स नहीं हो पा रहा है तो हमेशा प्राइस को रिड्यूस कर देना पड़ता है। शुड गुड्स बी सोल्ड एट इवन बिलो कॉस्ट, क्या सामान अपने लागत मूल्य से भी कम में बेचा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आगे देखते हैं। There are only some of the questions which management will have to answer for the purpose of solving the problems, indicating even the ordinary profit and loss account, the balance sheet will not serve any useful purpose. What is required is that all the accounting information should be analyzed according to each type of activity। यहाँ कह रहा है मैनेजमेंट को आंसर देना होता है, जवाब देना होता है इस क्वेश्चन के जो अराइजेज होता है उसके लिए। फिर यहाँ देखें फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इंडिकेटेड एबव, यहाँ पर जो ऊपर दिया गया प्रॉब्लम अराइज होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा, द ऑर्डिनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट विल नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पस। जो बैलेंस शीट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस या बोले तो इनकम स्टेटमेंट होता है वो सर्व नहीं कर पाता है, एक जानकारी पर्पस नहीं दे पाता है इसके रिगार्डिंग, कॉस्टिंग के रिगार्डिंग। फिर देख रहे हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू ईच टाइप ऑफ एक्टिविटी। फिर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं इच सच एन एनालिसिस इज मेड से फॉर ईच आर्टिकल प्रोड्यूस फॉर और फॉर ईच जॉब डन, द मैनेजमेंट वुड हैव टू डील गुड डील ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ which some good decision can be made. It is because of need to handle the sort of problems indicated by the question put above the needs of cost accounting was felt and this branch of accounting emerged। ये इससे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लिंक हो जाता है। The next one about the next paragraph we learn about cost accounting is concerned with analysis of all expenses and cost incurred so that the cost of completing each job or producing each product or for the matter completing any identified activity is known। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कर सकता है, ये एनालाइज करता है किसी भी बिजनेस कंसर्न, मतलब बिजनेस कंसर्न का मतलब क्या हम लोग समझेंगे, बिजनेस कंसर्न का मतलब हम लोग बिजनेस समझते हैं कोई भी जॉब में जॉब को कंप्लीट होने के क्या कॉस्ट लगेगा, या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें क्या कंप्लीटिंग का कॉस्ट पड़ रहा है, फाइनल कॉस्ट पड़ रहा है, उसके बारे में। फॉर द मैटर कंप्लीटिंग एन आइडेंटिफाइड एक्टिविटी, ये सब की जानकारी रखता है कॉस्टिंग, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। नॉट ओनली द टोटल कॉस्ट हैज बीन असर्टेड,
सिर्फ टोटल कॉस्ट ही नहीं, द फिगर हैज आल्सो द फुल्ली एनालाइज इनटू ऑल कंपोनेंट। इसका जानकारी, इस फिगर की जानकारी हर कंपोनेंट में की जा सकती है, हर रूप में ली जा सकती है। टेक एन एग्जांपल ऑफ द लेसन विच इज यू हैंड। हम लोग इसके बारे में एक एग्जांपल पढ़ते हैं, डिफिनेशन का क्या हो सकता है। It would be desirable to note the cost of paper and the cost of printing is as well as the cost of getting it prepared before it is sent to press. It is with the help of such an analysis only that useful information would be available to management for its purpose. अब हम लोग डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिफिनेशन क्या हो सकता है जो हम लोग को एग्जाम में लिखना है। डिफिनेशन और द ओनली डिफिनेशन वी शुड हैव टू write in our examination to gain and achieve the marks, proper marks. Okay, so let us discuss about definition. The Institute of Cost and Management Accountants, London, has defined cost accountancy as the application of costing and cost accounting principle, methods and techniques to the science, art and practice of cost control and the ascertainment of profitability. It includes the presentation of information derived therefrom for the purpose of managerial decision making. ठीक है, ये डिफिनीशन हम लोग को याद रखना है। किसने कहा था ये डिफिनीशन? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, लंदन के द्वारा डिफाइंड किया गया है। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग इज here a second definition given by an institute as the technique and process of asserting cost and cost accounting as. The second definition we will learn about the process of the accounting for cost from the point at which expenditure is incurred or committed to the establishment of its ultimate relationship with cost center and cost unit. In its wide usage, it embraces the preparation of statistical data and the application of cost control methods and the ascertainment of profitability of activities carried out or planned. Here we look about definition given by the institute bring out the point that the processes and the techniques of ascertaining cost having following aims. Above given here we look about above given definition what say about the final rule. Cost accounting, that is keeping cost under check. The second one is asserting profitability and the profit on, including asserting causes that lead to a particular figure. The third one is about collection and presentation of such information as it required by the management in making decision. The decision is to be made by maybe made by made maybe of various, sorry for the mistake, made maybe of various types. Some example of them have been mentioned on the previous page. Here are the examples: the paper and the press. Let take a look about advances of cost accounting. Okay, it is if a good system of cost accounting is installed, the under mentioned advantage should be available. First one is, with the help of cost accounting, it would become possible to measure and then prove efficiency. This is done by comparing cost in one period with those in another period and cost of one firm with that of another, etc. ठीक है, suppose in the month of July 1993 the labor cost per unit comes to 6 rupees. हम लोग सपोज करते हैं मंथ ऑफ जुलाई 1993 में लेबर कॉस्ट था पर यूनिट का 6 रुपया बैठ रहा था। हम कोई सामान बना रहे थे और उसको पर यूनिट एक सामान बनाने में हमको लेबर कॉस्ट हमको 6 रुपये देना पड़ा। वेयर इन द मंथ ऑफ जून 1993, अगर हम जून में प्रीवियस देखें तो 1993 जून मंथ का द फिगर वाज 5 रुपीज 70 पैसा, जो उसकी उसी की कीमत 5 रुपीज 70 पैसा था। हियर वी लुक अबाउट द करेंट ईयर इज 30 पैसा मोर देन द प्रीवियस ईयर। इट वुड इंडिकेट दैट द सम कंटेंट देयर इज इनएफिशिएंसी इन द यूज ऑफ लेबर। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एक्सटेंट है, सम एक्सटेंट अनयूजफुल यूज ऑफ लेबर हो रहा है। One should note that really speaking, cost accounting is the only way of objective measuring of efficiency. Here is an important note you should write on its copy. What should write? One should note that really speaking, the cost accounting is the only way of an objective measuring of efficiency.
This is especially so when actual costs are compared against what is known as standard cost, which may be thought of as target cost. The second advantage of cost accounting is when prices are within the control of the firm. प्राइस फर्म के कंट्रोल में रहता है, इट विल बी पॉसिबल टू फिक्स द प्रॉपर प्राइस ओनली इफ द कॉस्ट आर नोन। तो हम लोग प्राइस फिक्स कर सकते हैं अगर हम लोग को कॉस्ट की जानकारी हो सके। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कॉन्ट्रैक्टर सेंड टेंडर टू द प्रोस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर, वी ही कैन डू ओनली he can do so only on the basis of costing information in his possession। ठीक है। The third advantage of cost accounting is even when it is not possible for the firm to control prices, it has still to decide whether a certain product should be produced or not, having regard to the price which is available। सपोज हम लोग मान के चलते हैं एक मार्केट में प्राइस है 7 रुपीज, वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इज 7 रुपीज 5 पैसा। द फर्म विल हैव टू डिसाइड वेदर दिस प्रोडक्ट टू बी सोल्ड और वेदर दिस प्रोडक्शन शुड बी स्टॉप। अगर हम लोग प्राइस में अगर कोई चीज हम लोग खिलौना बना रहे हैं और उसकी मार्केट प्राइस है 7 रुपये, लेकिन हम लोग का कॉस्ट ही उसके ऊपर जा रहा है 7 रुपये 50 पैसा, तो क्या फर्म को ये डिसीजन लेना चाहिए कि उसका प्रोडक्शन करे मार्केट में बेचने के लिए या फिर उसे रोक दे उसका प्रोडक्शन। द फोर्थ एडवांटेज इज इन स्पेशल टाइम फॉर मोर स्पेशल कस्टमर स्पेशल कंसेशन हैव टू बी गिवन, दिस इज आल्सो कैन बी डिसाइडेड ओनली बाय रेफरेंस टू द फिगर ऑफ कॉस्ट। कभी कभी हमारे स्पेशल कस्टमर को स्पेशल कंसेशन भी देना पड़ जाता है, ये सिर्फ उसी कॉस्ट अकाउंटिंग के फिगर्स के रेफरेंस के जरिए ही हम इसे डिसाइड कर पाते हैं। द फिफ्थ एडवांटेज इज cost accounting necessitates a number of records to be maintained. Good deal of information is then automatically available. For example, availability of stock of raw material would be known. This will help the management in two ways. Any theft or pilferage will be immediately apparent. Also, the more important, it would be possible for the firm to plan its work. कॉस्ट अकाउंटिंग नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। एक गुड डील इंफॉर्मेशन इज देन ऑटोमेटिकली अवेलेबल। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर ज़रूरतों को पूर्ति कर पाते हैं तो एक अच्छा डील हम लोग कर पाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए हम लोग स्टॉक और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और हमारे पास कितना है कितना घटा हुआ है इसकी जानकारी ले पाते हैं। ये मैनेजमेंट को दो तरह से हेल्प करता है। एनी थिफ्ट और पिलरेज विल बी इंडिपेंडेंटली अपैरेंट, और कोई चोर है तो उसे पकड़ लिया जाता है। ऑल्सो द मोर इम्पोर्टेंट इट विल बी पॉसिबल फॉर द फर्म टू प्लान इट्स वर्क, आगे के फ्यूचर प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द सिक्स्थ वन इज सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ मैन एंड मशीन कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट देयर बीइंग full costing information available. The seventh one is cost accounting enables a firm to assume the exact causes of losses and waste and thus enable it to put a stop to that. The eighth one is the cost accounting encourages the habit of making decisions on the basis of calculation and therefore management will be discouraged from being reckless. Thank you for today. We will discuss in next part of the cost accounting lesson 1. Thank you. Have a good nice day.